Hello everyone, welcome to Elite Rankers Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session we will be starting with the next unit, that is, as you can see over here, body fluids and circulation. So obviously, since this is the first session, so we will be mainly focusing on the introductory part of body fluids and circulation. Okay. Now, starting with the basic concept or the basic idea about circulation. So, there are some simple organisms we all know, and then there are some complex organisms. So, simple organisms अगर बोलेंगे तो unicellular organisms, जिसका सबसे आसान और easy example होगा sponges and also the nidifolds. तो उनमें क्या होता है? They circulate water drawn from their surroundings through their body cavities, facilitating exchange of substances between body parts. So basically, it's a simple exchange of fluids or nutrients or gases like oxygen and carbon dioxide between the surroundings and their body, which is a simple exchange as in जो diffusion हम जानते हैं. Okay, that is simple movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. तो ये जो सिंपल चीज होता है वो होता है सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया या हायर ऑर्गेनिजम्स हो गया, so in those cases there is a special circulatory fluid within our body which is there to transport the important materials. तो important materials में क्या क्या आएगा? फर्स्ट तो न्यूट्रिएंट्स आएगा और सेकेंडली आएगा ऑक्सीजन एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज, वो करने के लिए एक स्पेसिफिक मीडियम है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, जो मीडियम को हम सब जानते हैं उसको हम ब्लड बोलते हैं, isn't it? So blood is basically the circulatory fluid of our body, the major circulatory fluid. इसके अलावा lymph भी है जो हम we will see as we proceed through this session. So now what is this need for circulation? क्यों चाहिए हमारे बॉडी में circulation? So that obviously each and every cell and tissue in our body get the required energy and oxygen that they require for the normal functioning, isn't it? Just ठीक जैसे हमें भी एनर्जी चाहिए, हमें भी खाना चाहिए. क्यों हम खाते हैं? क्योंकि भूख लगता है. क्यों भूख लगता है? बिकॉज द बॉडी इज डिमांडिंग एनर्जी. ओके, क्योंकि नॉर्मल भी जो काम हम लोग करते हैं, वेदर इट्स सिटिंग एट द टेबल एंड वर्किंग ऑन द लैपटॉप ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क दैट वी आर डूइंग. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर ब्रेन स्पेशली, isn't it? तो वो काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी आएगा थ्रू द न्यूट्रिएंट्स. Okay, so that is basically the need or the importance of nutrition. Okay, sorry, circulatory fluid. So to produce energy for growth and repair, and it also needs to constantly remove the wastes like CO2, ammonia and uric acid. So waste removal is also an important mechanism जो कि blood के जरिए ही होता है, through the circulatory system only, isn't it? Because the blood goes to the kidneys and then the kidneys filter out all the important waste materials. इसमें सबसे important हो जाएगा uric acid, urea, ammonia, okay, जो कि आता है from the protein waste, waste products of protein digestion or protein metabolism. And also अगर गैस के बारे में बात करेंगे तो CO2 is also a toxic gas which needs to be eliminated from our body. We take in oxygen in exchange of CO2, isn't it? CO2 बाहर कर दे रहे हैं और बदले में ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं. ओके, तो इसमें भी जो है ब्लड इज इन्वॉल्व्ड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड. ओके, now moving forward, now what are the important functions of circulation? So number one होगा transport of nutrients from the gut to the tissues, obviously because nutrients मतलब क्या, वो हमारे gut में जा रहा है, जिसको हम GI ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, isn't it? कोई भी न्यूट्रिएंट जो हम लोग we are intaking through our food, it is actually going and digesting and metabolizing through our gut. Gut means उसमें स्टोमक आएगा, उसमें इंटेस्टाइन आएगा एंड उसमें रेक्टम भी आएगा, जहाँ पे टेम्पोररी स्टोर होता है और फिसेस और स्टूल. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स. और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आएगा? Mainly from the proteins or the amino acids, because this is something I've already talked about when I talk about the unit of biomolecules. Whenever we are talking about proteins, the monomers of proteins will be the amino acids, and whenever we are talking about the structure of amino acids, the main important component that is present in amino acid is nitrogen. So protein metabolism होके जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, that is nitrogenous waste, जिसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही important है. So the nitrogenous waste will be transported
फ्रॉम द टिश्यूज टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो वो ट्रांसपोर्ट भी करेगा सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट इज ब्लड. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड CO2. ओके, and also transport of hormones, that is also something important. Now hormones kahan pe transport hoga? To the target tissues. Okay, now this is something important because what are hormones? Hormones are nothing but chemical messengers, isn't it? They are protein in nature mostly, and they are basically sending a message to some other organ, you have to do this now. Okay, as we saw in the respiratory system, sorry, in the reproductive system also, isn't it? LH is there, FSH is there. These are all hormones which are actually giving signals to the gonads, to the testes in case of males and ovaries in case of females. तो hormones का काम ही वही है कि message को हमें send करना, जो कि obviously in the form of a chemical message, इसलिए they are known as the chemical messengers. तो जिस टिश्यू या जिस ऑर्गन तक सेंड करना है, दैट इज माय टारगेट टिश्यू और टारगेट ऑर्गन. ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द हार्मोन, जिस ऑर्गन में या जिस टिश्यू में वो प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से वो रिलीज हो रहा है, वहां से जहां पे वो काम करेगा, टू द ऑर्गन ऑन विच दैट हार्मोन विल एक्ट, दैट विल बी द टारगेट टिश्यू. तो वहां से वहां तक उसको लेके जाना है. कौन लेके जाएगा? अगेन द सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट इज ब्लड. Next will be transport of heat. Transport of heat is also very important to maintain the normal homeostasis of the body. Okay, normal जो body temperature है, वो maintain करने के लिए transport of heat is also important. Okay, and last but not the least, transport of water. We all know that in our body 70 to 80% is water, isn't it? So that water transport is also very important job or function of circulation. Okay. Now when we are talking about circulatory fluid, as I already mentioned, that blood is the most common circulatory fluid जो कि higher animals में दिखता है, including human beings obviously. Basically it's all in one, one in all. Okay, so it's the master of all. And अगर lymph के बारे में बात करेंगे तो that is also present, which is also important for transport of certain substances. Blood and lymph together constitute the fluid tissue in the human body. तो अगर हम फ्लूइड टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑब्वियसली ब्लड है, लेकिन उसके साथ साथ लिम्फ भी आता है. ओके, व्हाट इज लिम्फ? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल्स. सो बेसिकली यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड पोस्टमैन्स जॉब. ओके, नाउ व्हाट इज पोस्टमैन्स जॉब? Blood and lymph collect various substances such as respiratory gases, hormones, etc. and deliver them to the appropriate organs and tissues. So ये exactly postman का काम जैसा हुआ, isn't it? कि कहाँ से तुम कहीं से तुम important substance collect कर रहे हो. Postman क्या करता है? He or she goes to the postman's office, collects the important letters, जो भी important letters आया है, लिफाफा आया है, इसको collect करता है. उसके बाद जाके डिफरेंट घरों में जिस लेटर में जो एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस में जाके उस घर पे जाके वो डिलीवर करता है, isn't it? That is the job of the postman. So here if we think, if we imagine blood and lymph as the postman, so they are doing exactly the same job, isn't it? They are collecting important substances from different important organs and tissues, and then they are delivering them to the appropriate organs or tissues which require them. Okay. So the blood vascular system is involved in the defense system of the body as it contains various types of phagocytic cells, जिसको हम rather policeman's job बोल सकते हैं. क्यों, कैसे बोल सकते हैं policeman's job? क्योंकि policeman का job क्या है? To protect the normal people, to protect the civilians out there. आम आदमी को protection देना from thieves and चोर, डकैत, isn't it? That is the job of the policeman. So यहाँ पे blood vascular system क्या कर रहा है? They are actually protecting the body from different type of pathogenic cells. How? By expressing or by containing different types of phagocytic cells. Okay, and what are phagocytic cells? What do you mean by phagocytic cells? Those cells which can do phagocytosis. Okay, and what is phagocytosis? It is nothing but engulfment of the pathogens that are entering inside our body and trying to produce harm. So those pathogens are the thieves. And our blood vascular system, which is containing these phagocytic cells, that is the policeman. Isn't it? So postman का job हो गया, policeman का job हो गया. Next क्या बोल रहा है? The blood albumins provide capillary osmotic pressure to prevent excessive loss of fluids from blood and help maintain its normal consistency. So blood जो है उसका एक normal consistency है. Okay. और blood का the total volume of blood inside a human body is 5 ml.
sorry, very sorry, 5 liter. Okay, so 5 liter is the total volume of blood inside our body, inside a normal healthy human being. Okay, तो उस 5 लीटर में एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगा, isn't it? एंड टू मेंटेन दैट नॉर्मल कंसिस्टेंसी की कब मेंटेन नहीं होगा, जब एक्सेस फ्लूइड लॉस हो जाएगा ब्लड से, isn't it? क्योंकि ब्लड का भी अगर हम देखेंगे, ब्लड का भी कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स तो है ही, इसके अलावा मेन क्या है, मेन पानी है, मेन वाटर है. ओके, तो जितना भी एक्सेस फ्लूइड लॉस होगा उतना ब्लड का जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है दैट विल बी डिस्ट्रक्टेड. Okay, and it should not be there, it should not happen that. Okay, so for that we have some important proteins that are present in the blood, जिसमें से सबसे important protein हो जाएगा albumin, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करेगा. कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स अ प्रेशर क्रिएटेड ऑन द ब्लड कैपिलरीज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्सेसिव फ्लूइड लॉस नहीं होगा और ब्लड का जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है दैट विल बी मेंटेन. ओके, and then we also have some important clotting factors that are present in blood, which are again nothing but different proteins present in the blood. We will be talking about in details about blood clotting in the second session of in the second part of this session. So such important clotting factors or clotting proteins that are present in blood will be fibrinogen and prothrombin, and they play a very important role in the clotting of blood, or rather blood coagulation, to prevent excessive bleeding. Okay. Okay, now there are some important hormones that are there which the blood carries to different parts of the of our body. Okay, hence we can also refer the circulatory system as the third integrating system. Okay, because they are actually delivering these hormones to the important locations. Okay, say for example, and then we also have something called blood pressure, which is again something important. This is basically the pressure exerted by the blood when it is flowing through the blood vessels on the walls of the blood vessels. Okay, and that is something which is monitored. Okay, and when we are talking about the volume of the blood, that is 5 liter, which I already mentioned, that is controlled by two important hormones. One is antidiuretic hormone, which is abbreviated as ADH. So please remember the full form, it is important, it can come as questions also. Antidiuretic hormone, that is ADH. Okay, and aldosterone hormone. So these are the two important hormones which are responsible for controlling the volume of blood. Okay. Okay. So the circulatory system has a pumping station, which is nothing but the heart. I think this is something I've already mentioned in one of the previous units. Today we will be talking about details of heart. So heart का काम basically है oxygen pump करना, sorry, blood pump करना. That is the main job of heart. Okay, and blood pump करना मतलब obviously उसमें oxygen is there. एक होता है deoxygenated blood, एक होता है oxygenated blood. Isn't it? Vein से deoxygenated बोला जाता है, arteries से oxygenated बोला जाता है. This is something basic knowledge that we all know. Isn't it? So heart का main काम ही है pump करना, but वो pump करना बहुत ही एक important job है. Heart अगर रुक गया मतलब हम भी रुक जाएंगे. Isn't it? But अगर देखा जाए ध्यान से तो हार्ट का काम बस इतना ही है कि उसको पंप करना है ब्लड. So that is the pumping station. And the circulatory system will include the circulation of two body fluids, जो कि already हम जान चुके हैं, lymph and blood है. So basically हम circulatory system को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. So before moving on to the next part, I would just like to discuss some MCQs. So as we can see over here, what they are asking, the human circulatory system helps in number 1, supply of nutrients to the body cells, number 2, transport of oxygen to the body cells, number 3, collecting nitrogenous wastes from the body cells, number 4, all of the above. So obviously the right option will be all of the above. Okay. Now coming to the next part, that is lymphatic system. Okay, तो lymphatic system को हम क्या बोलेंगे? So again the circulatory system is having a pumping station, that is the heart. तो उसको हम जो circulatory body fluid है उसको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, lymph and blood. So ultimately circulatory system को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. So पहले हम पढ़ेंगे regarding the lymphatic system. So let's see how we can divide. So one will be the lymphatic system and the other will be the cardiovascular system. So cardiovascular system में basically हमारा heart आ जाएगा और हमारा blood आ जाएगा. और lymphatic system में क्या क्या आएगा? The important lymph, obviously सबसे पहले तो lymph आएगा ही, that is the fluid.
उसके बाद उसके साथ साथ आएगा द लिम्फेटिक वेसल्स, द लिम्फ नोड्स, ओके, द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो इन सब के बारे में पहले देखते हैं। सो बेसिकली जब हम लिम्फेटिक सिस्टम बोल रहे हैं, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? सो इट इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जहाँ पे कोई वेसल या आर्टरी या वेन या कैपिलरी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हम ओपन बोलेंगे, ओके। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होगा, ओके। तो वो क्या क्या कंपोनेंट्स है? समथिंग आई हैव ऑलरेडी मेंशन, लिम्फ आएगा, लिम्फ टिश्यूज आएगा, लिम्फ कैपिलरीज आएगा, एंड देयर विल बी लिम्फ नोड्स. So basically, if we talk about the lymphatic system, it consists of an extensive network of blind-ended lymph capillaries in the tissues. Now, this is something very important. अभी मैं बोली थी कि कैपिलरी नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. अभी फिर से हम लोग देख रहे हैं कि lymph capillaries है. So this is something confusing, isn't it? लेकिन डिफरेंस क्या है नॉर्मल ब्लड कैपिलरी के साथ लिम्फ कैपिलरी का? ब्लड कैपिलरी मतलब वो एक नेटवर्क बना रहा है, ओके. व्हाट इज द जॉब ऑफ कैपिलरी? टू मर्ज टुगेदर और टू कनेक्ट टुगेदर द डिफरेंट वेन्स एंड आर्टरीज, ओके. तो वो ब्लाइंड एंडेड नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ किसी को जुड़ रहा है, दैट इज द जॉब ऑफ ब्लड कैपिलरीज. लेकिन अगर हम लिम्फ कैपिलरीज के बारे में देखेंगे, सो दे आर ब्लाइंड एंडेड, ओके. वो ना कहीं से शुरू हो रहा है ना कहीं पे खत्म हो रहा है. So the lymph capillaries will unite to form increasingly larger vessels, जिसको हम बोलेंगे lymph vessels. Okay, so lymph capillary जाके lymph vessels बनाएगा और lymph vessels जाके lymphatic ducts बनाएगा. So this is something you need to remember. Okay, so I will just highlight it for you. तो पहले आएगा lymph capillaries, उसके बाद आएगा lymph vessels, फिर आएगा lymphatic ducts. So this entire thing is important. This entire flow chart you need to remember. Okay, so this is the entire flow chart or the entire flow that you need to remember कि lymph capillary से lymph vessels होगा और lymph vessels से lymphatic ducts होगा. And these lymphatic ducts, they will be draining the lymph into the veins in the lower neck region. Okay, lower neck region मतलब जहाँ पे neck हमारा खत्म हो रहा है. Okay, now this is again something we need to remember कि lymph या lymphatic system का जो भी हिस्सा है, जैसे कि lymph हो जाए, lymph nodes हो जाए, lymph vessels हो जाए, these are mainly present in our neck region and in our armpit region. ये दो region में सबसे ज्यादा होता है. Okay. Okay, now moving forward to the next part, that is lymphatic capillaries. Okay, so this is basically how the typical image of lymphatic capillaries will look like. So these are the different tissue cells that we have, and throughout these tissue cells, obviously the different blood vessels and blood veins and blood arteries तो होगा ही. Okay, red मतलब artery, blue मतलब vein. Okay, और उसके साथ साथ होगा लिम्फेटिक कैपिलरी. तो जितने भी देखो लिम्फेटिक कैपिलरी या लिम्फेटिक वेसल दिख रहा है वो सारा ग्रीन कलर में. ओके ओके, एंड दिस इज बेसिकली द कैपिलरी बेड. ओके, सो लिम्फ कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक. दे आर क्लोज्ड एंडेड ट्यूब्स. सो सी दैट देयर इज नो ओपनिंग, दे आर क्लोज्ड एंडेड. That form vast network in the intercellular spaces, intercellular sleep in between the cells. अगर ये tissue cell है तो in between the cells जो space है वहां से जा रहा है the lymph capillaries. Okay, so their walls will be composed of endothelial cells with porous junctions. So जो walls होगा वो उसमें basically endothelial cells होगा और बीच बीच में there will be some porous junctions. Porous मतलब जिससे lymph can flow in and flow out. Okay, so again this is an image that you can see. So this is basically this green colored fluid is the lymph, and these are the openings that are there. This is the interstitial fluid, and obviously these are the different cells that are there. Okay, so cells के बीच से जो space जा रहा है जो कि interstitial space है या intercellular space है, वहीं से जो lymph है वो flow करेगा. Okay, interstitial or tissue fluid, proteins, microorganisms and absorbed fats can easily enter the lymph capillaries through the porous cell junctions. Okay, so I think this is the same image that they have given over here. So now talking about the lymph vessels. So lymph capillaries will merge and form larger lymphatic vessels. Lymph से lymph vessels और lymph vessels से the lymphatic ducts. Rather lymph capillaries से lymph vessels and lymph vessels से lymphatic ducts. This is something I have told you or showed you in the previous slides. So lymph vessels and ducts will be the thin walled and valvular, full of valves. Okay,
And the peristaltic contraction of smooth muscles of the walls of lymph vessels pushes the lymph towards the neck region. Okay, तो neck region तक वो कैसे पहुंचेगा? Through peristaltic movement, जो कि होगा by the contraction of smooth muscles. Okay. Moving on to the next part, where we will be talking about the lymphatic ducts. So lymphatic vessels जो है वो जाके वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और जाके बनाएगा larger lymph ducts. Okay. Now all the lymph vessels from the left side of the head, the left arm and the parts of the chest region, the lower part of the body will empty lymph into the left lymphatic duct, जिसको हम thoracic duct भी बोलेंगे. मतलब कि लेफ्ट पार्ट का जितना भी लिम्फ है वो सारा जाके ड्रेन करेगा इनटू द थोरैसिक डक्ट. और थोरैसिक डक्ट का दूसरा जो नाम है दैट इज काइलीफेरस डक्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट लिम्फैटिक डक्ट और वेसल व्हिच इज प्रेजेंट इन द बॉडी. सो लेफ्ट साइड में जितने भी लिम्फैटिक कैपिलरीज या लिम्फैटिक वेसल्स है वो सारे के सारे जाके थोरैसिक डक्ट में ड्रेन करेंगे, जो कि बेसिकली लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी का लिम्फैटिक डक्ट है. और उसका दूसरा नाम है काइलीफेरस डक्ट और उसको हम बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फैटिक वेसल बोल के जानेंगे. ओके, लिम्फैटिक वेसल या लिम्फैटिक डक्ट. So the thoracic duct empties the lymph into the venous system at the junction of the left internal jugular vein and the left subclavian vein. Lymph from the right side of the neck, head, right arm and the right part of the thorax is collected into the right lymphatic duct. तो ठीक जैसे left lymphatic duct है, similarly there will be a right lymphatic duct where all the lymph from the different parts of the right side of the body will be coming and draining into. Okay. The right lymphatic duct empties the lymph into the venous system at the junction of the right subclavian vein and the internal jugular vein. They include the red bone marrow, the thymus, the spleen, the lymph nodes, tonsils and etc. And also appendix and malt is there. Now malt is something important as in the full form is very important from question point of view. So the full form of malt is mucosa associated lymphoid tissue. So this is again something that I will highlight for you so you remember, because many questions come where they actually ask the full form. Okay, so MALT stands for mucosa associated lymphoid tissue. Okay, so appendix और mucosa भी MALT भी एक important part बनेगा lymphatic system का. So what are the different parts? Red bone marrow will be there, thymus will be there, spleen will be there, lymph nodes will be there, tonsils will be there, and along with that MALT and appendix. Okay. Lymph nodes will be located along the lymph vessels, and bacteria, viruses, these will be phagocytized by the WBC in the lymph node. So basically जो main difference है between blood and lymph we will be talking about in details, वो ये है कि lymph में जो RBC है वो नहीं रहता है, बाकी मोरलेस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स नहीं रहता है, बाकी जो मेन सेलुलर पार्ट बचा ब्लड का वो है डब्ल्यूबीसी एंड दैट इज समथिंग प्रेजेंट इन द लिम्फ. सो लिम्फ का मेन फंक्शन है इन द डिफेंस मैकेनिज्म और इन द इन द इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. So when we are talking about the lymphatic organs, important organs में क्या क्या आएगा, जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, रेड बोन मैरो आएगा, थाइमस आएगा, स्प्लीन आएगा, अपेंडिक्स आएगा. ओके, बट अपेंडिक्स इज एक्चुअली कंट्रोवर्शियल बिकॉज अपेंडिक्स इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ rudimentary organ. Okay, it's actually considered as a rudimentary organ which has no job inside our body but it's present. Okay, वो evolution होते होते वो organ रह गया है, लेकिन as a result of evolution it has no longer any function inside our body. Okay, so when we are talking about the lymphatic organs, the first important organ that we need to talk about will be the spleen. So उसमें spleen में क्या रहेगा, mainly the RBCs will be there and also the lymphocytes, means the WBCs. Okay, and the spleen will be acting as a hematopoietic organ. Okay, where the blood cells will be produced, blood cells as in particularly the RBCs, until the 5th month of gestation, means until 5 months of the developing embryo inside the mother's womb. Spleen will be the organ where hematopoiesis will occur. Okay, after that धीरे धीरे bone marrow हो. Okay, because bone marrow मतलब क्या, that is present inside the bone. So obviously when the baby is just 5 months, you can imagine the bones are not developed that much कि उसके अंदर bone marrow develop होगा और वहाँ पे hematopoiesis start हो जाएगा, isn't it? So there needs to be some alternative organ, because RBC is something or blood cells is something that is very much important.
isn't it? So till that 5 months of period, spleen will be the organ which will be serving as the center for hematopoiesis. Okay. So this is basically an image or a diagram where I have highlighted the different lymphatic organs that are present in human beings. So we have the tonsils and the adenoids. Then we have the lymph nodes in the neck region. Then we have the thymus in the upper chest region. Then we again have lymph nodes, in the chest region just below the heart. Then we have the spleen. Then we have the Peyer's patches that are present in the lower abdominal area. Then we have the appendix. Then we have the bone marrow, जो सबसे ज़्यादा होता है femur में because it is the largest bone of the body. Then we also have some lymph nodes and lymphatic vessels in the in the groins, in the genital region. Okay. Now talking about lymph. So it is a part of the blood that comes out of the blood capillaries to supply oxygen and nutrients to the tissues as the ECM. So basically lymph जो है वो extracellular fluid है, मतलब सेल के बाहर. Okay. So basically lymph is nothing but a part of the blood. Blood का ही एक हिस्सा है जो कि खुद में ही it circulates. Okay, it starts circulating from a certain point and then it again goes and drains into that point. Okay, so it's continuously recirculating inside our body. So basically lymph को हम blood का उस हिस्सा बोल सकते हैं which is acting as the extracellular fluid. Now how is this lymph formed? When blood passes through the capillaries due to high filtration pressure at the arteriolar ends of the capillaries, along with plasma, many substances like glucose, some small organic molecules, some inorganic salts, they are filtered into the extracellular spaces as tissue fluid, or rather the ECF or the extracellular fluid. So basically क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो जब ब्लड कैपिलरी के थ्रू फ्लो कर रहा है, ब्लड कैपिलरी मतलब क्या, समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रहा है. तो कैपिलरी का एक आर्टेरियोलर एंड होगा जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रेशर कुछ चीजें ब्लड से फिल्टर होके सेल के बाहर आ जाए. सेल का बाहर मतलब इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. तो उसी सारे चीज को मिला के जो फ्लूइड बनेगा दैट विल बी द लिम्फ. तो उसी सारे चीज मतलब क्या, उसमें क्या क्या होगा, ग्लूकोज होगा, उसमें कुछ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होगा एंड सम WBCs will also be there. The tissue fluid exchanges nutrients O2, CO2 and some important other metabolites with the tissue. So basically काम जो है वो ब्लड का ही है और लिम्फ जो है वो भी ब्लड का ही एक हिस्सा है. Okay. So some of the large plasma proteins, like say for example albumin, globulin, these are the large plasma proteins. Okay, plasma proteins matlab proteins that are present in the plasma part of the blood. I think this concept you know that blood can be separated into two parts. One is plasma, one is the serum. Okay, what is the difference between plasma and serum? सीरम में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो नहीं रहेगा, प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ब्लड का वो रहेगा. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, सो बेसिकली प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम प्लस द क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो वो प्लाज्मा वाला जो पार्ट होगा ब्लड का उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स विल बी देयर व्हिच विल नॉट बी फिल्टर्ड आउट, causing an increase in the colloidal osmotic pressure of the blood plasma. This pressure will favor the movement of about 85% of the ECF into the capillaries at the venular ends. मतलब कैपिलरी का जो venular ends है, जिस जहाँ पे प्रेशर कम है, वहां पे जाके मतलब वहां तक मूव करेगा 85% of this ECF, and the remaining जो 15% बचा होगा that will be collected into the lymphatic system through the lymph capillaries. Okay, so that is the main concept. Only 15% of the ECF, बाकी जो 85% है वो venular end में चला जाए. Okay, this ECF enters the lymphatic capillaries and it is referred to as the lymph. So only 15% of the ECF, and this lymph is finally drained back into the left and right subclavian veins of the venous system. And in a pregnant woman, when the enlarged uterus exerts pressure on the abdominal veins, the capillary hydrostatic pressure increases. It leads to accumulation of fluids in the legs and hence the swollen legs in them. Now this is some unique thing that most of you must have observed. बहुत सारे movies and serials में भी दिखाते हैं कि pregnancy के time पे क्या होता है, पैर जो होता है वो फूल जाता है, specifically the foot region. Okay, वो फूल जाता है. क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जो यूटरस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, as a result of which it is exerting some pressure on the abdomen. Abdomen मतलब क्या?
जो एब्डोमेन में वेंस है, ब्लड वेंस जो है उसमें भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, isn't it? As a result of which the pressure है वो increase करेगा and this will lead to accumulation of ECF in the legs, जिसकी वजह से there will be swollen legs or edema. Okay. Now talking about the composition of lymph. Lymph में क्या क्या होगा? It will be containing water, some plasma proteins, some electrolytes, some leukocytes, mostly the lymphocytes means WBCs, some coagulation factors will be there, some antibodies will be there, some enzymes will be there, and some nutrients will be there. It is similar in its composition to the blood plasma except that it contains a much lower concentration of protein and other nutrients that of plasma. मतलब जो भी है वो बहुत कम कंसंट्रेशन में है एंड जो नहीं है वो क्या है, द आरबीसीज. आरबीसीज आर समथिंग दैट आर प्रेजेंट ओनली इन ब्लड बट एब्सेंट इन lymph. Okay, exactly that is what they have said over here, that RBCs are absent in lymph. An emulsion of lymph and triglyceride fat characteristically present in lacteals is called chyle. Okay, chyle क्या है? जो lacteal vessels में दिखता है. Basically it's an accumulation or it's a mixture of triglyceride fat and lymph, जिसको हम chylomicron भी बोलते हैं, जो कि it's nothing but a type of lipoprotein. Okay. Okay, now talking about the functions of the lymphatic system. So lymph returns the absorbed nutrients and wastes from the body parts to the blood. It transports lymphocytes from the lymphatic glands to the blood. It transports digested fats which are absorbed through the lacteals present in the intestinal villi to the blood vascular system. So जो absorbed fat है या digested fat है वो return करता है to the blood vascular system. That is also another important function of lymph. It destroys the invading organisms and particles in the lymph nodes. Immune defense mechanism or immune function, that is also a very important function of the lymphatic system. Okay. So again, I just like to discuss some MCQ. Which of the following are the fluid tissues? So 4 options are there: blood, lymph. Number 3 is both 1 and 2, and number 4 is none. So obviously very easy. The right option will be both 1 and 2. Next question, lymphatic system in humans is dash type of circulation. Obviously again very easy, open type of circulation. Okay, because there is no concept of veins and arteries. The largest lymphatic organ in humans, thymus, tonsil, malt and spleen. The right option will be spleen. Okay. And again, I'm just mentioning over here the full form of malt again because it's important for you from question point of view. It is mucosa associated lymphoid tissue. Okay. Next important MCQ, lymph is similar in its composition to blood. Next option is blood plasma, then blood serum and then blood clot. So the right option will be blood plasma. Okay. Which of the following are absent in lymph? Water, lymphocytes, antibodies, RBC. Very important and very easy question. The right option will be RBC. RBC is absent in lymph. Next question. The largest lymphatic vessel is left lymphatic duct, chyliferous duct, thoracic duct and all of the above. The right option will be all of the above. Again, this is a very confusing question. See, पहला वाला ऑप्शन जब देखोगे तब लगेगा ये सही है, फिर सेकंड देखोगे, फिर थर्ड, सारा सही है. तो in many of these types of questions, our tendency is कि first option देखा, चलो ये सही है, टिक मार देते हैं, बाकी का option देखा ही नहीं. Okay, और actually में right option पता चला last वाला है जो कि है all of the above. क्योंकि all these are the different names of the same duct, isn't it? Left lymphatic duct को ही thoracic duct बोलते हैं और chyliferous duct भी बोलते हैं. So obviously the right option will be number 4, that is all of the above. So that is the importance of why you should read all the options very carefully before going on to take the the right option. Okay. Now coming to the second part of this session, that is clotting system. Okay, or basically the mechanism of clotting of blood, which is something very important. It is also known as hemostasis. Basically hemostasis, hemostasis you can say. Okay, it's the other name for clotting of blood, but it's a very important concept, not only from a NEET point of view. NEET point of view, obviously it's an important concept, but it's also a very important concept if
if you are actually very much interested to know about the human body, to know about the normal physiological process, and also it's something very important, or it's a concept that you need to develop very nicely if you if you can achieve your dream of cracking NEET, which I'm sure you will be able to do, and then you go on to become an MPS doctor. So for that purpose only, for also for your future purpose also, blood clotting is a very important aspect that you need to know. Okay, so why it's hemostasis? Because hemo means blood and stasis means standing. So क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अगर सीधी बात में समझा जाए तो जब भी हमारा कोई चोट आता है, चोट मतलब ऐसा चोट जहां से खून निकलता है, ठीक है, बहुत बड़ा चोट नहीं, छोटा मोटा चोट, ओके, उससे क्या होता है, कुछ देर तक खून निकलता है, उसके बाद अपने आप जो है खून बंद हो जाता है। और थोड़ा अगर गहरा चोट आ गया तो क्या होता है, खून बंद ही नहीं होना चाहता है, इजंट इट? तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी शुड ऑलवेज गो अंडर द टैप वाटर, वी शुड वॉश दैट पार्ट, दैट दैट कट वुंड, एंड देन वी शुड प्रेस इट। हल्का सा दबाना है, ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है, ताकि जो भी ब्लड है वो निकल जाए, और उसके बाद अपने आप क्या होता है, ब्लड जो है वो मतलब रुक जाता है, निकलना रुक जाता है, इजंट इट? सो ये जो रुक जा रहा है, जो कि अपने आप हो रहा है, इजंट इट? वी आर नॉट डूइंग इट, इजंट इट? इट्स लाइक अ मैजिक कि अभी खून निकल रहा था, अभी बंद हो गया है, इजंट इट? तो ये जो मैजिक है, ये बॉडी कर रहा है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ब्लड क्लॉटिंग, ओके। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग, ये जो मैजिक हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ओके। Now, how does blood clot? So when a blood vessel is injured, a number of physiological mechanisms are activated that promote this process of hemostasis, okay. So कोई भी अगर चोट आया है, ऐसा चोट जहां से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका मतलब कोई ब्लड वेसल इंज्योर हुआ है, ब्लड वेसल जो है वो फट गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो अभी बाहर आ रहा है, इजंट इट? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये जब होगा, when a blood vessel will be injured and the blood will be starting to ooze out from that blood vessel, there will be a number of physiological mechanisms. Physiological मतलब जो normal है, always remember, physiology मतलब normal, pathology मतलब जो abnormal है, जो कि usually नहीं होना चाहिए, okay. So number of physiological mechanisms will be there, जो कि body में activate हो जाएगा और धीरे धीरे hemostasis का process करेगा। ब्रेकेज ऑफ अ ब्लड वेसल एक्सपोजेस कोलाजन प्रोटीन्स टू द ब्लड। तो जैसे ही ब्लड वेसल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और वहां से खून निकलेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, कोलाजन प्रोटीन्स विल बी exposed to the blood. कोलाजन प्रोटीन्स मतलब जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर कनेक्टिव टिश्यू, okay. So this is a nice GIF that I have given over here. So this is exactly what happens. So if this is the injured part, सारे प्लेटलेट्स जाके यहाँ पे एक प्लग बनाएगा, as a result of which the blood flow will be stopped. Okay, so if we are talking about this entire process or mechanism of hemostasis, so there are three steps, or rather you can say three processes, okay, or three ladders that are there in the entire process of this hemostasis, which are overlapping with each other, okay. So the first step will be vasoconstriction, where the vessels will be constricted. Vaso means vessels, constriction means constricted, chota ho jana, theek hai. So the first step will be vasoconstriction. So I have given image also, okay. So these are basically the cross section of a normal blood vessel. So this is how vasoconstriction will look like, and this is how vasodilation will look like. Dilation matlab फूल जाना, बड़ा हो जाना, constriction matlab छोटा हो जाना, okay. So again, these are different views. This is a view from a different angle, this is a view from another angle, but of the same thing, vasoconstriction and vasodilation. Second step जो होगा वो होगा platelet plug formation, okay, which is exactly what I have already mentioned. These are the platelets that are going over here and aggregating over there, okay. Aggregate करने के वजह से एक plug formation हो रहा है, okay. And the third step will be fibrin web formation, okay. So fibrin is a very important clotting protein, or very important clotting factor rather, which is involved in this process of blood clotting.
जो कि जाके वहां पे एक अच्छा सा वेव फॉर्म करेगा, एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल ऑकर आफ्टर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. ओके, so these are the three main steps that we need to remember when we are talking about blood clotting. So पहले होगा vasoconstriction, second step होगा platelet plug formation, and third step होगा fibrin wave or clot formation, okay, which is the final step. So again see, this is an image that I have given which explains the three different stages of blood clot. तो first stage में क्या हुआ कि चोट पहुंच गया है, blood vessel rupture हो चुका है और वहां से blood is oozing out. Okay, so platelets will attach to the endothelium, that is the blood vessel wall. So this is the blood vessel wall which is ruptured, फट गया है, and these are the platelets, blue colored platelets, which are coming and getting attached to the endothelium of the blood vessel wall. Okay, स्टेज 2 में क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा. तो प्लेटलेट आने लगा है और आके आके धीरे धीरे वो एक प्लग फॉर्म कर चुका है. ठीक है, सो द प्लेटलेट स्टार्ट टू रिलीज फाइब्रिन एंड बिगिन टू सिल द एंडोथेलियम. सो सिर्फ प्लेटलेट आने से नहीं होगा, those platelets will be starting to release fibrin जो कि धीरे धीरे एंडोथेलियम को सील करे. Okay, and the last and the final stage will be where the fibrin network will trap the RBCs and completely seal the endothelium. See, this is the wave. ये जो white color में दिखा रहा है ना, this is basically the web formation or the fibrin clot formation. Okay, so these are nothing but the fibrin polymers जो कि सारे RBC को trap करेगा and it will be completely sealing the endothelium. Okay. So now we will be talking about in details about each of these steps. Okay, so the first step है that is vasoconstriction, where the blood vessel is actually going to constrict. Okay, so there will be the smooth muscles which are present in the wall of a damaged blood vessel contract. Okay, and those smooth muscles will be contracting. Okay, and smooth muscles are something जिसका contraction या relaxation हमारे ऊपर नहीं है. It is something involuntary जो हम नहीं control कर सकते. ठीक है, सो जैसे ही ब्लड वेसल में चोट पहुंच गया और वो फट गया, रप्चर हो गया और वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट किया, वैसे ही जो ब्लड वेसल के वॉल में जो स्मूथ मसल्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव शोन इन दिस डायग्राम. ओके, सो दिस इज हाउ vasoconstriction will look like. This makes the lumen of the vessels narrow, reducing or stopping the flow of blood from the ruptured blood vessels. So vasoconstriction जो है वो एक पहला डिफेंस मैकेनिज्म होगा, यू कैन से, कि जहां से ब्लड निकल रहा है वो जगह अगर हम छोटा कर देंगे तो ऑब्वियसली जितना ब्लड निकलेगा वो थोड़ा कम होगा. Isn't it? पहले अगर 10 ml निकल रहा था तो अभी एटलीस्ट 2 ml निकलेगा. Isn't it? ओके, सो ऑब्वियसली पहले अगर 10 ml निकल रहा था जो मैं बोल रही थी, अभी एटलीस्ट वो 5 ml हो. Isn't it? So that is the first defense mechanism of the body, कि जितना ब्लड निकल रहा है उसको हमें कम करना है. ओके, so see, that is the image that I have given over here, just like a GF, GIF. It's a very nice image that is explaining the process. Okay, so पहले जो ब्लड वेसल था वो नॉर्मल था, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया वो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा थिन हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितना ब्लड पहले निकल रहा था अभी उससे थोड़ा कम निकलेगा. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. ओके, तो जहाँ पे सारे के सारे प्लेटलेट्स आएंगे वो एक साथ इकट्ठा होगा, मतलब कि एग्रीगेट होगा, और उसके बाद जो प्लेटलेट प्लग है वो फॉर्म होगा. ओके, so when the endothelium is ruptured, platelets adhere to the collagen and release some secretion. So जैसे endothelium rupture हो गया है, कोलाजन के साथ जो blood है वो expose हो चुका है. blood मतलब उसमें platelets है. platelets are a very important part of blood, isn't it? platelet, RBC, WBC, ये तीन है सबसे important cellular part of blood. ब्लड का अगर सेलुलर पार्ट के बारे में बात करेंगे, दो पार्ट्स होता है ब्लड का, isn't it? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सेलुलर पार्ट. सेलुलर पार्ट में क्या रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. ओके, तो जैसे ही वो एंडोथेलियम रप्चर हुआ है ब्लड वेसल्स का, वैसे ही कोलाजन के साथ ब्लड का एक्सपोजर हो गया है, एंड नाउ द प्लेटलेट्स विल बी कमिंग फ्रॉम द ब्लड एंड दे विल बी एडहियरिंग मतलब चिपकना. ओके, दे विल बी एडहियरिंग टू द कोलाजन एंड रिलीजिंग सम सिक्रीशन. सम सिक्रीशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा फाइब्रिन, जो जाके हमारा वेब बनाएगा, जो कि थर्ड स्टेप में. ठीक है, so these secretions will aggregate other platelets and make them sticky so that they adhere to the already stuck collagen and form a platelet plug. तो जैसे ही वो प्लेटलेट आएगा वो धीरे धीरे कुछ ऐसा सिक्रेट करेगा जो जाके वो प्लेटलेट को
और भी ज्यादा चिपकाव बनाएगा ताकि वो एंडोथेलियम के साथ चिपका रह सके. ओके, एंड द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, जिसको हम फाइब्रिन वेव या फाइब्रिन क्लॉट बोलेंगे. So the activator substances from the injured vascular wall, platelets and blood proteins adhering to the injured vascular wall initiate the clotting process. Okay, तो basically थर्ड स्टेप या फाइनल स्टेप जो है उसी में हमारा जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो इनिशिएट हो रहा है. ओके, सो क्लॉट हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज अ ब्लड क्लॉट? इट इज अ वेव ऑफ फाइब्रिन विद ब्लड सेल्स ट्रैप्ड इन इट. ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी. ओके, सो बेसिकली वो एक जाल जैसा होगा. वेव मतलब क्या? जाल, isn't it? So it will be a wave जिसमें सारे के सारे आरबीसी ट्रैप्ड रहेंगे along with fibrin. Okay. So again I will be explaining each of these steps in much more details because this is a very important concept that you need to understand very clearly. Okay, concept एकदम clear होना चाहिए. तो क्या होगा? पहले अगर स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे, टिश्यू डैमेज होगा. टिश्यू डैमेज के बाद एक होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होगा वैस्कुलर डैमेज जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि वैस्कुलर मतलब वेसल का डैमेज हो रहा है जो कि अंदर है, isn't it? So it will be intrinsic. Intrinsic मतलब this is something interior, जो अंदर वाला बात है, और extrinsic मतलब जो बाहर वाला बात है. टिश्यू डैमेज अगर होगा तब एक्टिवेट होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे, और अगर वैस्कुलर डैमेज होगा मतलब टिश्यू को छोड़ के वेसल तक पहुंच गया है डैमेज, तब होगा इंट्रिंसिक पाथवे. ओके, तो ये हो गया स्टेप 1. अभी अगर स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे तो स्टेप 2 में क्या होगा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा जो कि कॉमन होगा. एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर होगा उसमें भी स्टेप 2 आएगा. इंट्रिंसिक पाथ अगर होगा उसमें भी स्टेप 2 आएगा. तो उसमें क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो एक्टिवेट होगा. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज अगेन नथिंग बट अ क्लॉटिंग फैक्टर or a clotting protein. It is acting like a clotting factor. It may not be the main clotting factor, but it is very important because देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा, isn't it? प्रोथ्रोम्बिन को जो एक्टिव बनाएगा. Because see, all of these clotting factors, these are not active. In normal situations they are inactive also only, isn't it? Because normal situation में भी ये अगर एक्टिव हो जाएंगे तो हमेशा ब्लड जो है वो क्लॉट करता रहेगा, isn't it? Which is also a disease, a pathological condition जो होता है clotting factor defect. बहुत सारे ऐसे डिजीज होता है जिसमें ब्लड जो है वो अपने आप ही क्लॉट करने लगता है, which is not something normal, isn't it? क्लॉटिंग कब चाहिए? When there is some damage to the tissue or the vessel, when there is some choke, isn't it? तभी ना क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए. When a person is normal, when there is no kind of injury, जब कोई चोक नहीं है तब क्लॉटिंग का भी कोई जरूरत नहीं है. तो ऑब्वियसली जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है, तो उनको एक्टिव करना चाहिए, उनको एक्टिव करना पड़ता है. हाउ? विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट एक्टिवेटर्स. तो स्टेप 2 में आएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच विल गो एंड कन्वर्ट द इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टू द एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है, और इसमें और एक चीज चाहिए जो कि है आयनिक कैल्शियम, Ca2+ ion. ये भी बहुत important है for this process to take place. Okay, so for formation of thrombin, which is the active clotting factor from the inactive prothrombin, we require the prothrombin activator as well as ionic Ca2+ ion. Okay, which will be occurring in step 2 irrespective of whether it's an intrinsic pathway or an extrinsic pathway. Okay, this is something very important. This is where you actually develop the concept. Okay, this slide is very important as far as clotting of blood is concerned. Okay, so whether it's damage to the tissue, that is in extrinsic pathway, or whether it's damage to the vessels, that is vascular damage or intrinsic pathway, step 2 will be common. Prothrombin activator दोनों cases में ही चाहिए होगा. Okay, फिर आएगा स्टेप 3 जहां पे हमें फाइब्रिनोजन मिलेगा और फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना होगा फाइब्रिन में जो कि एक्टिव फॉर्म होगा फाइब्रिनोजन का. ये कौन करेगा? थ्रोम्बिन. सो हियर कम्स द नेसेसिटी और द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रोम्बिन. क्यों हम स्टेप 2 में थ्रोम्बिन बनाया इतना कुछ करके? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन स्टेप 3 टू कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू द soluble fibrin which will actually go and form the clot. कैसे बनाएगा soluble fibrin से insoluble fibrin? बिकॉज ऑब्वियसली सॉल्यूबल होगा तो वो तो क्लॉट बना नहीं पाएगा, वो डिसॉल्व होकर बाहर चला जाएगा, isn't it? तो सॉल्यूबल फाइब्रिन को बनाना है इनसॉल्यूबल फाइब्रिन. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा जो कि है फैक्टर 13. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. देयर आर वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. आई विल बी शोइंग यू द लिस्ट. एक टेबल फॉर्म में मैंने बनाया है. ओके, वो हम देखेंगे. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे. सो इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाला चोट हुआ है, मतलब कि वैस्कुलर डैमेज हुआ है.
So intrinsic pathway कब होगा? When the blood is exposed to the collagen of the injured wall of the blood vessels. मतलब कोलाजन के साथ ब्लड का जो कि है एक्सपोजर हो चुका है, तब हमारा इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा. This will be activating factor 12 and in turn it will activate another clotting factor which activates yet another reaction in cascade fashion. So cascade हम किसको बोलते हैं? जब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है. ओके ये एक जाके उसको एक्टिवेट कर रहा है, फिर वो जाके दूसरे चीज को एक्टिवेट कर रहा है, फिर वो जाके चौथा को कर रहा है एक्टिवेट. तो ऐसे करके जब हो रहा है एक के बाद एक, उसको हम बोलते हैं कैस्केड फैशन. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द इंट्रिंसिक पाथवे. This results in the formation of the prothrombin activator. So as a result of which prothrombin activator form होगा, जो कि step 2 में हो रहा है, which is common. Intrinsic extrinsic दोनों में होगा. Okay. Now talking about step 1, that is formation of prothrombin activator. कैसे बनेगा? So it is a complex of activated substances. It is formed by a complex cascade of chemical reactions that occur in the blood in two pathways. Okay. अब अगर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के बात करेंगे तो एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब बाहर वाला चोट जहां पे टिश्यू डैमेज हुआ है, वैस्कुलर डैमेज उतना नहीं हुआ है, लेकिन जो वैस्कुलर वॉल है वो डैमेज हो चुका है. ठीक है, एंड दैट विल बी कमिंग इन कांटेक्ट विद द ब्लड. ओके, तब हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट है. सो इस डैमेज वैस्कुलर वॉल विल बी रिलीजिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. So this is something very important. When the extrinsic path is activated, okay, there is something that will be released which is known as thromboplastin, and this thromboplastin will go and activate factor 8. वहाँ पे हो रहा था factor 12, यहाँ पे हो रहा है factor 8. As a result of cascade of reactions, the final product formed is the prothrombin activator. So final product same हो रहा है, वहाँ पे भी prothrombin activator था, यहाँ पे भी prothrombin activator था, लेकिन वहाँ पे हो रहा है through factor 12, but यहाँ पे हो रहा है through factor 8. Now coming to step 2, that is platelet plug formation. Activation of prothrombin. So कैसे होगा? With the help of prothrombin activator in presence of Ca2 plus ion. So the prothrombin activator in the presence of sufficient amount of Ca2 plus ion converts the inactive prothrombin to the active thrombin. Then आएगा हमारा final step जो कि है formation of fibrin, जहाँ पे हमारा soluble fibrin से insoluble fibrin clot बनेगा. कैसे बनेगा? With the help of thrombin. Okay. The fibrin stabilizing factor, that is the factor 13, it will be released from the platelets and it will be replacing the hydrogen bonds with covalent bonds and cross-links the fibers to form a mesh wall. क्योंकि जो पहला वाला जो क्लॉट बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें जो बॉन्ड्स रहेगा, मतलब वो भी एक वेब होगा, वो भी एक मेश होगा, लेकिन उसमें जो बॉन्ड्स होगा वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा. ओके, और वीक चीज से काम नहीं चलता है, isn't it? बिकॉज हमें वो मजबूत बनाना है ताकि वो जो चोट पहुंचा है वो ठीक हो जाए, वो अपने आप हील हो जाए. So that is why to replace those weak hydrogen bonds by strong covalent bonds, we need this factor, that is factor 13. The insoluble meshwork of fibrin fibers spreading all directions adhere to the damaged surface and trap the blood cells and platelets. तब जाके वो जो डायग्राम में दिखाई थी कि white mesh होगा और बीच में सारे जो RBCs है वो फॉर्म होकर रहेंगे. ठीक है, within a few minutes after the clot is formed, it begins to contract so that the fluid is expelled out. Okay, मतलब खून बंद होने के बाद एक थोड़ा सा straw colored का fluid निकलता है. Okay, and that is basically the fluid that is getting expelled out. क्योंकि वो जो mesh बना है वो इतना tight बनता है कि between those cells the fluid that is there, that is expelled out. Okay, this is called clot retraction and the fluid thus formed is called the serum. Okay, so that is where the concept of serum comes. Serum means plasma without the clotting factor. Mainly the main clotting factor, that is fibrinogen. मतलब सीरम में ना तो फाइब्रिनोजन होगा, ना तो प्रोथ्रोम्बिन होगा, ना तो थ्रोम्बिन होगा, ना तो फाइब्रिन होगा. Okay, so basically serum means plasma minus the clotting factors. Okay, platelets are necessary for clot retraction. Failure of clot retraction is an indication that the number of platelets in the blood might be low. ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है कि ब्लड तो बंद हो गया लेकिन वो जो स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूइड है जो स्ट्रॉ कलर्ड मींस एकदम लाइट येलो, व्हाइटिश टू येलो, दैट इज बेसिकली स्ट्रॉ कलर्ड. तो वो फ्लूइड अगर नहीं निकला उसका मतलब क्लॉट रिट्रैक्शन नहीं हुआ, और क्लॉट रिट्रैक्शन नहीं हुआ मतलब प्लेटलेट काउंट माइट बी लो. Okay, the platelet count falls low in diseases such as dengue and the patient may require transfusion of blood platelets because otherwise there will be
bleeding. Okay, so this is basically the table where I have given the important clotting factors. Okay, so first we have factor 1 जिसका नाम है fibrinogen. Next we have factor 2 जिसका नाम है prothrombin. Next we have factor 3 जिसका नाम है thromboplastin. Then we have factor 4 जिसका नाम है calcium ions. Then we have factor 5 जिसका नाम है proaxillerin. Then we have factor 7 जिसका नाम है proconvertin. Then we have factor 8 जिसका नाम है anti-hemophilic globulin, which is also known as anti-hemophilic factor A. Then we have factor 9 which is known as plasma thromboplastin component, or rather PTC, और factor 9 का और एक नाम है, that is Christmas factor or AHFB. Christmas factor is very important, question आ सकता है. Okay, remember this, that factor 9 का दूसरा नाम है Christmas factor. Then we have factor 10 which is also known as Stewart-Broa factor. Then we have factor 11 which is known as plasma thromboplastin antecedent of PTA, or also known as AHFC. Then we have factor 11 which is also known as Hegeman's factor, and factor 13 which is also known as fibrin stabilizing factor. Okay, so इसमें एक important note है कि factor 6 जो है जिसको हम prothrombin activator बोलते हैं, it is no longer referred to as a separate factor. It is a combination of activated factors 5 and 10. Now talking about anticoagulants. Okay, anticoagulants में जो सबसे important आएगा वो है heparin, which is an anticoagulant synthesized by the mast cells and the basophils. Mast cells and basophils are very important parts of the immune system of our body. Okay, and heparin का काम क्या है? Anticoagulant मतलब क्या? Anti means opposite और coagulant मतलब coagulation. So anticoagulant factor मतलब जो coagulation को रोकेगा, clotting को रोकेगा, होने नहीं देगा. Okay, so basically that is the function of heparin. So it will activate antithrombin, which is again a plasma protein. It will combine with thrombin and inactivate it. मतलब जो thrombin activator का उल्टा काम करेगा basically. Okay. Cormorants of plant origin are the precursors of anticoagulants such as warfarin. Warfarin is again also a very important example of anticoagulant. Anticoagulant. It is antagonistic to vitamin K. मतलब vitamin K का ठीक उल्टा काम वो करेगा. Vitamin K is again a very important vitamin for the synthesis of blood clotting factors. Okay. So warfarin antagonistic मतलब antagonistic to vitamin K मतलब क्या? वो synthesis होने नहीं देगा. So it will prevent the synthesis of blood clotting factors like 2, 7, 9 and 10, which are generally formed in the liver. And it is also known under the brand names Coumadin and Jantoven. Coumadin or Jantoven भी warfarin का ही दूसरा नाम है. It is an anticoagulant normally used in the prevention of thrombosis and thromboembolism. What is it? It is the formation of blood clots in the blood vessels and their migration elsewhere in the body. Exactly जो मैं बोल रही थी कि clotting disorder कि जब नहीं चाहिए clotting factor तब भी clotting factor body में activate होके बैठा है और वो अपने आप clot कर रहा है blood को. Okay, so that is basically the condition which causes thrombosis or thromboembolism कि blood vessel के अंदर ही blood clot form हो रहा है और वो दूसरे जगह में migrate भी कर रहा है. सोचो मेरा liver के blood vessel में clot हुआ तो वो migrate करके stomach तक जा रहा है. Okay, तो ऐसे conditions में anticoagulants are very important जो body के अंदर जाएगा और वो clotted blood को unclot करेगा. Okay, so heparin and warfarin, these are the very two important anticoagulants that we need to know. And also there is something called EDTA. Okay, the full form for which is ethylene diamine tetraacetic acid. This is also very important because ethylene is used as an anticoagulant when we actually give our blood samples to be tested. Okay, जब blood test करने के लिए हम खून देते हैं तो वो एक vial में डालते हैं खून. Okay, and that vial actually contains this EDTA, और it can also contain sodium citrate और sodium oxalate जो basically anticoagulant का काम करता है. ठीक है कि वायल में जब हम खून ले रहे हैं मतलब जब तक वो टेस्ट नहीं होगा, कुछ भी टेस्ट हीमोग्लोबिन का हो सकता है, टाइफाइड का हो सकता है, whatever test is there, whenever we are giving our blood, the vial in which the blood is taken after collection always contains these anticoagulants. कि blood अगर coagulate हो जाएगा तो obviously it cannot be tasted. So they bind to the calcium ions and thus make the calcium ions unavailable for the action in clotting. क्योंकि हम देखे हैं calcium ion अगर नहीं होगा तो जो prothrombin activator वाला जो step था जहाँ पे prothrombin से thrombin बन रहा है तो that step will be stopped. और वो step अगर stop हो जाएगा तो उसका next step भी नहीं होगा, isn't it? That is the what to say, the fascinating
पार्ट ऑफ एनी कैस्केड कि कोई भी स्टेप में हम उसको रोक देंगे तो बाकी जितना भी बचा वो बंद हो जाए. ओके, तो एग्जैक्टली दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस EDTA, दैट इज इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड. तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है एज क्वेश्चन. ओके, so last but not the least, ending with a very important MCQ. Which of the following ions play important role in blood clotting? Obviously the right option will be calcium. Okay, so I think that's it about this session. We will be soon moving on to the next session. Next session. Till then, stay tuned and thank you.